Assalamu alaikum. Hi viewers. Last time we have discussed the general definition of physics, branches of physics and scope of physics. Today the topic of our discussion is scalar and vector quantity and Newton's first law. Let me define first scalar quantity. Scalar quantities are those quantities which require only magnitude, not direction. For example, scalar quantity has only magnitude. For example, mass. Mass is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because it needs only magnitude. Magnitude means a value with a proper unit. For example, if I ask a shopkeeper to give me 5 kg of sugar, so I will not tell him give me 5 kg of sugar towards east, 5 kg of sugar towards west. No need of it. 5 kg of sugar perpendicularly, 5 kg of sugar parallel. No need of direction here. So if there is no need of direction in any physical quantity, then that physical quantity is said to be scalar quantity. So mass is a scalar quantity. Similarly, distance is a scalar quantity, because distance means the length between any two points. The length between any two points. That is called distance. Whereas displacement is a vector quantity, we will discuss in vector. Similarly, work is a scalar quantity, because if I ask someone to apply work, I will tell him apply 10 joule of work, 15 joule of work, but it doesn't need direction. It apply this much work in this direction, this much work in this direction. So work is a scalar quantity, and work is equal to F dot S, which is the scalar product, a dot product. So we will discuss the dot and cross product later. Now let us define vector quantities. Vector quantities are those quantities which have magnitude with the proper unit. Magnitude with a proper unit means a value with a proper unit, and as well as direction. Magnitude with a proper unit as well as direction. For example, if I ask someone to apply 10 Newton of force or 5 Newton of force, or if I ask someone to apply some force on this table, he will get confused that how much force, he will get confused that in which direction I should apply force. In which direction I should apply force? The force can be perpendicular, the force can be parallel, the force can be at any angle, the force can be at any angle, at any direction. So he will get confused. So if I ask him to apply this much force on this direction, then he will get the point and he can easily apply force on this table, because he now get full information. The full information is he get magnitude as well as direction. So those physical quantities in which direction are needed, that quantities are said to be vector quantities. So force is a vector quantity. Torque is a vector quantity, because torque may be clockwise, torque may be anti-clockwise. Similarly, velocity is a vector quantity, because velocity is equal to displacement divided by time, or we can define velocity as the rate of change of displacement. If it is the rate of change of displacement, then it is vector quantity, because displacement is a vector quantity. Similarly, speed is a scalar quantity, because speed is equal to rate of change of distance, and distance is a scalar quantity.
Speed is equal to distance divided by time. Distance is scalar quantity, so speed is also a scalar quantity. Velocity is equal to displacement divided by time. Displacement is vector quantity, so velocity is also a vector quantity. Acceleration is a vector quantity because acceleration is equal to velocity divided by time. It is the rate of change of velocity. The change in velocity with respect to time is acceleration. That is why acceleration is a vector quantity, because velocity is a vector quantity. So acceleration is a vector quantity. So it is all about the general definition and examples of scalar and vector quantities. Then later on we will discuss the head-to-tail rules of addition for vector quantities, or some rules of additions for vector quantities, subtraction for vector quantities, how vectors can be multiplied, how vectors can be added, subtracted, divided, and so on. But we will discuss these things later. We will also discuss scalar product, vector product, but let me today define Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. The Newton's first law of motion is a body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion until an external force exerts upon it. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी. एक बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ये चीज अगर इधर पड़ी है और रेस्ट में है तो ये क्या मत तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि मैं इस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करूं. सिमिलरली, अगर मैं यहां से एक बॉल को फेंकूं, इफ आई थ्रो अ बॉल, the ball will continuously in motion unless an external force exerts upon it. जब तक कि उस बॉल पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो बॉल हमेशा मोशन में रहेगा. अब जब हम बॉल फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है. वो क्यों? Why the ball stops after some time? It is because there are external forces on the ball, and that external forces are the friction between the surface and the ball. जिस surface के ऊपर बॉल मोशन कर रहा है, उस surface और बॉल के दरमियान एक frictional force है. एक तो वो force उस पे बाहर से लग रहा है जो इसको बॉल को रोक रहा है. The second is the air resistance. जो बॉल है उस पे बाहर से हवा का दबाव भी है, उस वजह से भी वो बॉल रुक रही है. And the third is the gravitational force from the earth. अर्थ की तरफ से जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है. जब चाहे हम उसको ऊपर फेंक के तब भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हवा का दबाव भी है. और अगर उसके हम एक सरफेस के ऊपर उसको हम रोल करें या फेंके तो उस सरफेस और बॉल के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, हवा का दबाव भी है, और उसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. तो ये सारे फोर्सेस हैं जो उस पे लग रहे हैं, इसलिए वो बॉल रुक जाता है. अगर हम न्यूटन लॉ के मुताबिक अगर हम ये सारे फोर्सेस इससे हटा दें, अगर इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, जाहिर है कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लाजमी उस सरफेस में होगा. अगर उस सरफेस को इतना स्मूथ करे कि बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो तक पहुंचाए और हवा का दबाव उस पे अपोजिट साइड से बिल्कुल ही जीरो हो, बिल्कुल ही हवा का दबाव उस पे ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर हम जीरो कर दे कि बिल्कुल ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये तो फैला में है. फिर तो अगर उसमें कोई भी फोर्सेस ना हो और उसको मैं मूव करूं तो वो हमेशा मूव करता रहेगा. अगर उनमें से कोई एक फोर्स भी आएगा तो वो उसको रोकेगा या उसके मोशन को डिस्टर्ब करेगा. सिमिलरली ये चीज रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक मैं इसमें बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता. सो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. रिमेंबर दैट Newton's first law of motion is also called as law of inertia. Newton's first law of motion को हम law of inertia भी कहते हैं. और law of inertia, the word inertia is used here. So let me define first the inertia. Inertia का मतलब ये है, inertia एक खुसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की. It is the property of any body to keep its state of rest
or motion. کسی بھی باڈی کی یہ خصوصیت کہ وہ یا تو اپنے ریسٹ حالت کو مینٹین کرے یا اپنے موشن حالت کو مینٹین کرے، اس خصوصیت کو، اس پراپرٹی کو بیسیکلی انرشیا کہتے ہیں. تو یہ باڈی اگر ریسٹ میں ہے تو یہ باڈی چاہے گی کہ میں ریسٹ میں ہوں. ایک باڈی اگر موشن میں ہے تو وہ باڈی اپنے آپ کو اسی موشن میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. اور فار ایگزامپل میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں موشن میں ہوں تو میری باڈی وہ موشن چاہتی ہے، اور یک دم بریک لگتا ہے، گاڑی کا بریک لگتا ہے تو میری باڈی آگے کی طرف میں گرتا ہوں. پھر کیوں؟ کیونکہ میری باڈی تو موشن میں ہے. آئی وانٹ اٹ ٹو بی ان موشن. مائی باڈی وانٹس ٹو بی ان موشن. بٹ یک دم جب بریک لگتا ہے تو وہ تو ریسٹ میں آ جاتا ہے. دیٹس وائی آئی فال. So this is the Newton first law. In next lecture we will discuss the terms and the things related to scalar and vector quantities, and then we will further then we will continue the second law and third law of motion. Thank you.